Hello students, we are almost on the last topic of this chapter, that is the lung volume. There are four major lungs volume. Tidal volume, that is around 500 ml. Inspiratory reserve volume, that is 3000 ml. Expiratory reserve volume, that is the 1000 ml, and residual volume, that is the 1500 ml. In total, it becomes 6000 ml. This 6000 ml is the total amount of the air which our lung can hold. So could you believe why we are doing a lot of respiratory exercises? Because in normal breathing we are taking 6000 ml of air. We can take 6000 ml of air by when we are having the high capacity of breathing. हम बहुत अच्छे से जब रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हमारे लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की अच्छी आदत हो जाती है. then we can have a good, we can hold good amount of air. Okay, anyway, now tidal volume, which is around 500 ml, is divided into two categories. One is the dead space air and one is the alveolar air. So this is the dead space air, this one. Okay, it is a small amount of air which is breathed in, remains in the respiratory tract and doesn't take part in gaseous exchange. ये वो small amount of air है जो respiratory tract के अंदर रहती है, जो gaseous exchange में participate नहीं कर रही है, and it is around 150 ml, 150 ml per minute. Now the alveolar air. Alveolar air यहाँ से हम देखें. So this is the alveolar air जो alveoli के अंदर present. Alveolar air is the part of tidal air that effectively take part in gaseous exchange, because alveoli is the part where the gaseous exchange takes place. So tidal volume is the amount of air that is inhaled and exhaled during normal quiet breathing. जब हम एक normal breathing करते हैं उस टाइम पे जितनी एयर को inhale और exhale कर रहे होते हैं, that is a tidal volume. That is equals to dead space air that is remain in the respiratory tract. This one, यहाँ respiratory tract में रहती है, and the alveolar air which is inside the alveoli. So in total it is 500 ml. कहने का मतलब है कि हमारे lungs की capacity 6000 ml, but how much amount of air we breathe in and breathe out in a normal breathing, that is only 500 ml. So if we are doing the breathing exercises on daily basis, we can improve this capacity. Okay. The next is inspiratory reserve volume. It is the amount of air forcibly inhaled. हम बहुत ज्यादा forcibly inhale कर सकते हैं. That is a 3000 ml. आपको बहुत ज्यादा गहरी सांस लेते हो तो आप लगभग 3000 ml तक की एयर को इनहेल कर सकते हो. Look at this graph. This is very important graph. This is the total amount of air that can be held by lungs. That is 6000 ml. And 3000 to 6000. ये देखिए, ये total बना आपका 3000. This is the inspiratory reserve volume which we can breathe at the time of force inhaling. Okay. Now, the next one is expiratory reserve volume. We will understand this graph later. Expiratory reserve volume is the volume of air that can be exhaled normally. Normally, हम कितनी भी air को exhale कर सकते हैं. That is called expiratory reserve volume. The amount of expiratory reserve volume is 1000 ml. इसको हम supplement air भी कहते हैं. Here I would like to do a correction. Expiratory reserve volume is a volume of air that can be exhaled forcibly. जिसको हम forcibly exhale कर सकते हैं. That is the 1000 ml, and that is the expiratory reserve volume. So what is the vital capacity of the lungs? एक lungs की vital capacity क्या है? 3000 ml inspiratory reserve volume, 1000 ml, this is the expiratory reserve volume that we can exhale, and this is the amount of 500 ml, that is a tidal volume. So vital capacity is the inspiratory reserve volume plus tidal
capacity plus expiratory reserve volume. Now, what is the vital capacity? It is the volume of the air that can be taken in and expelled by maximum inspiration and expiration के टाइम पर हम जितनी एयर को breathe in और breathe out कर सकते हैं, that is called vital capacity. That includes tidal volume, that is 500 ml, inspiratory reserve volume that we can inhale forcibly, that is 3000 ml, expiratory reserve volume that we can exhale, that is 1000 ml. In total, it is 4500 ml. Now, what is a residual volume? Residual volume is the amount of air that remains in the lungs after maximal expiration. Maximal expiration के बावजूद भी जो एयर, ये देखिए, ये दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम. कितना भी आपने ब्रीथ आउट कर दिया उसके बावजूद भी 1500 ml की एयर हमेशा आपके लंग्स में भरी रहती है. दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम. तो टोटल आपकी लंग्स की कैपेसिटी क्या बनी, ये देखिए. टोटल कैपेसिटी बनी आपकी लंग्स की 6000 ml. ऐसे बना. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, 500 आपका टाइडल वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 and 1500 और 1000 approximately. ये 1500 होता है एक्चुअली. ठीक है. This is the residual volume. In total, it is 6000 ml of air which can be held by your lungs. Now, let's understand the composition of the air which we expired and which is an alveol. We are not in the position when we can bifurcate that I have to breathe in fully oxygen. हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है. What we generally do, we generally breathe air which contain oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. Now, the air we inhaled is known as inspired air. It contains 20.14% of oxygen, 0.03% of carbon dioxide, 79.03% of nitrogen, and very low amount of water vapor. In expired air, we contain 16.3% oxygen, 4% carbon dioxide, 79.7% nitrogen, a high amount of water vapor. So look here. Here we can see that the air we inhale, जो हम inhale करते हैं उसके अंदर इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन कम है. तो हम ये मान के चलते हैं कि हम मैक्सिमम एयर की ब्रीथ इन कर रहे हैं. अब हम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो हम कभी भी इनहेल्ड एयर में मान के नहीं चलते इन जनरल कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन किया. इसलिए हम जनरली इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की बात करते हैं. जो एक्सपायर्ड एयर है इसमें हमने 4% एयर को एक्सपायर किया है. 0.03% के कंपैरिजन में 4% इज अ बिग अमाउंट. वी आर रिलीजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ carbon dioxide in comparison of the air we inhale. Okay, so we consider that we mainly exhale carbon dioxide. Now, nitrogen 79.03 to 79.7%, and even it could vary because nitrogen as such during the process of respiration doesn't decompose. Yes, it may use for the other metabolic activities like the formation of protein, amino acids, etc. Now, water vapor, low amount of water vapor is present in inspired air. The high amount of air is present in expired. So, if I ask you, okay, can you prove that the air we exhale contain more water vapor? कैसे करें? Simple activity है. वो बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं जो स्पेक्स लगाते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं. आप अपने ग्लासेस को क्लीन करने के लिए कई बार आप एयर को एक्सेल करते हैं, वहां पे वाटर वेपर जमा हो जाता है, उससे आप क्लीन करते हैं. इसका मतलब एक्सेल एयर के अंदर हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट. हाउ यू कैन प्रूव दैट द रिलीज एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड? लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे. व्हेन यू हैव योर बर्थडे एंड व्हेन यू ब्लो ऑफ द कैंडल, जब आप कैंडल को बुझाते हैं, आप क्या करते हैं? बेसिकली आप एयर को एक्सेल करते हैं.
Exhaled air contain more carbon dioxide. Carbon dioxide ऑक्सीजन के ऊपर एक लेयर बना देती है. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्यूल, इसलिए हमें आग नहीं निकलती और हम आसानी से कैंडल को बुझा पाते. So by this activity we can do the another activity. आपके पास में लाइम वाटर है, आप उसमें एक्सेल करिए. If it turns to milky, then definitely the exhale air contain carbon dioxide. ऑक्सीजन आपको पता ही है कि inspired air contain more oxygen and expired air contain less oxygen. If we compare the alveolar air, the air which is present in alveoli contain 14.2 to 14.6% oxygen, 5.2 से 5.7% तक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, and nitrogen again it is 79.7 to 80%. So there is no change actually in case of nitrogen के केस में कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं आता है. So this whole I want to discuss in this video. Please revise this topic from the video as well as read page number 170 from your book and from your textbook and do the given question in your notebook. Thank you, students.